मया कृष्णेन निहताः सार्जुनेन रणेषु ये प्रवर्तयिष्यन्त्यसुरा स्ते त्वधर्मं यदाक्षितो धर्मदेव तदा भक्ताद् अहं नारायणो मुनिः जनिषे कौशले देशे भूमो हि समगो द्विजः मुनिशापनृतां प्राप्ता नृषिंस्तात तथोद्धवम् ततो वीतासुरेभ्योऽहं सद्धर्मां स्थापयन्नज सद्धर्मां स्थापयन्नज। बोलो स्वामीनारायण भगवाननी जय। श्री हरि कृष्ण महाराजनी जय। श्री राधा रमण देवनी जय। श्री लक्ष्मी नारायण देवनी जय। श्री नर नारायण देवनी जय। श्री गोपीनाथ जी महाराजनी जय। श्री मदन मोहन जी महाराजनी जय। श्री कष्टभंजन देवनी जय। अथ सत्संगी जीवन महात्म्ये तृतीयोऽध्यायः। शतानंद मुनिरुवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। अथ शास्त्रस्य चैतस्य श्रवणस्य विधिं ब्रुवे विशेषतो भवान् राजन् श्रोतुमर्हति सादरं स्वामिनारायणाय स्वाहा। रुदन्ति सर्वपापानि त्वेतस्य श्रवणक्षणे अस्माकं प्रलयं सद्यः कथेयं हा करिष्यति स्वामिनारायणाय स्वाहा। आर्द्रं शुष्कं लघु स्थूलं वाङ्मनः काय संभवं श्रवणं प्रदेहत् पापं पावकः समिधो यथा स्वामिनारायणाय स्वाहा। अस्मिन् वै भारते वर्षे सूरिभिर्देव संसदि अकथाश्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितं स्वामिनारायणाय स्वाहा। किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण त्वेतत् शास्त्रकथां विना स्वामिनारायणाय स्वाहा। अस्थिस्तम्भं स्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितं चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयोः स्वामिनारायणाय स्वाहा। जराशोकविपाकार्तं रोगाणां मन्दिरं परं दुष्पुरं च कृतघ्नं च सदोषं क्षणभङ्गुरं स्वामिनारायणाय स्वाहा। कृमिविड्भस्म संज्ञान्तं शरीरमिति वर्णितं तेन संसाधयेत् धीमान् स्वकार्यं यः स पण्डितः स्वामिनारायणाय स्वाहा। यत् प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तत्तु विनश्यति तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता स्वामिनारायणाय स्वाहा। बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथाश्रवणवर्जिताः स्वामिनारायणाय स्वाहा। मासे शुक्तेषु यत्र स्यात् स्वस्थता स्वस्य चेतसः तस्मिन् श्रव्यमिदं शास्त्रं पापसंघनिवारकं स्वामिनारायणाय स्वाहा। सप्ताहेनास्य श्रवणे प्रारभे द्वितीया तिथेः नवाहेनापि श्रवणे एवमेव समाचरे स्वामिनारायणाय स्वाहा। पक्षेण श्रवणेप्येवं मासेनाप्येवमेव हि ऋतूना श्रवणे त्वस्य तृतीयातः समारभेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। आद्या चतुर्थ्यष्टमी च तथा वर्ज्या चतुर्दशी अस्यारम्भे शुभः प्रोक्तस्तिथयोऽप्यखिला नृप स्वामिनारायणाय स्वाहा। अश्विनी रेवती हस्तः पुष्यो मृग पुनर्वसु अनुराधा भिजित् स्वाति रोहिणी श्रवण यात्रयं स्वामिनारायणाय स्वाहा। रुक्षाण्येतानि पुण्यानि ग्राह्याण्यत्रोदितानि वै तस्मादस्य समारम्भः कर्तव्यस्तेषु भूपते स्वामिनारायणाय स्वाहा। देशान्तरान्निजान् ज्ञातिम् आह्वयेच्च सुहृज्जनान् येषां तत्श्रवणे श्रद्धा ताश्चारम्भदिनात् पुरा स्वामिनारायणाय स्वाहा। देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवादम्भवर्जिताः पत्रं तेभ्योऽपि संलेख्यम् आगतांस्तांश्च मानयेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा।
आर्वाक् पञ्चहतो यत्ना दासनादीनि मेलयेत् विशाला वसुधा यत्र कुर्यात् तत्र कथास्थलं स्वामिनारायणाय स्वाहा कुर्वीत मण्डपं तत्र शुचौ स्थाने मनः प्रियं रम्भास्तम्भैश्च सद्वस्त्रैः फलैः पुष्पैश्च शोभनं स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्रोपवेश्य स्थानानि स्त्रीणां पुंसां यथोचितं व्यासासनं च रुचिरं रचयेत् चतुरो नरः स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रोत्रोणामासनादुच्चं मृदुलास्तरणान्वितं पार्श्विकादिसमायुक्तं रमणीयं विशेषतः स्वामिनारायणाय स्वाहा तदासनात् पृथ अवुच्चे मृदुले चासनोत्तमे सुबन्धनं सत्फलकं पुस्तकं सन्निधारयेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा पूर्वोक्तलक्षणैर्युक्तो ग्रन्थस्यास्यदुवाचकः प्रत्यहं स्वानिकं कुर्यात् ओषस्युत्थाय भूपते स्वामिनारायणाय स्वाहा ततः श्रोतृभिराहूतः स कथामण्डपं व्रजेत् प्रक्षाल्य पाणिपादास्यं कुर्यादाचमनत्रयं स्वामिनारायणाय स्वाहा धौतश्वेताम्बरधरः सद्गुरुं हृदये स्मरन् विप्रान् साधून् नमस्कृत्य सत्सङ्गी जीवनं नमे स्वामिनारायणाय स्वाहा ततः स्वपूज्य गुरुवादिराज्ञया विनयान्वितः उदङ्गमुखः प्राङ्गमुखो वा व्यासासनमुपाविशेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा तत एतस्याधिदेवतम् एतच्छास्त्राकृतिं हरिं मन्त्रैः समर्चयेत् एतेर्मुख्यः श्रोताकृताह्निकः स्वामिनारायणाय स्वाहा अथ ध्यानं स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रथमादिपञ्चमान्तपञ्चप्रकरणानि तु अस्य ऋत्तुन्दजान्वङ्घ्रि रूपाण्यङ्गानि यस्य वै स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रोक्तानि सन्ति दिव्यानि श्रीहरिं करुणाम्बुधिं तं भक्तिधर्मतानायं हृदये चिन्तयाम्यहं स्वामिनारायणाय स्वाहा निजाश्रितजनानन्दं मुनिवर्णिनिषेवितम् अतिरम्यनराकारं तारुण्ये वयसि स्थितं स्वामिनारायणाय स्वाहा रूपानुरूपावयवं नवपद्मदलेक्षणम् अतीव दर्शनीयं च शान्तं कोमलभाषणं स्वामिनारायणाय स्वाहा नूत्नरक्तारविन्दाभस्ताङ्घ्रितलशोभितं चञ्चतुङ्गारुणानखचन्द्रावलिविराजितं स्वामिनारायणाय स्वाहा मितस्मितस्फुरत्तुल्यदन्तमुक्तावलिप्रभं प्रलम्बपीवरभुजं विशालहृदयस्थलं स्वामिनारायणाय स्वाहा पृथुतुङ्गललाटं च सूकपोलारुणाधरं दधतं केसरे पुण्ड्रे माले कुङ्कुमचन्द्रकं स्वामिनारायणाय स्वाहा घनश्यामं च तुलसी मालिकां दक्षिणे करे दधतं च द्वितीयेन ददतं पाणिना भयं स्वामिनारायणाय स्वाहा बिभ्रतं तुलसी काष्ठ सूक्ष्ममालाद्वयं गले शुभ्रं यज्ञोपवीतं च वामस्कन्धेषु शोभनं स्वामिनारायणाय स्वाहा वासः शुभ्रं मृदुपरिदधतं दृढकच्छकं वसानमुत्तरपटं हंसपक्षसितं तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा सूक्ष्मं सितं च पटकं बध्नन्तं शेषणिमञ्जुलम् उत्सवे भक्तसम्प्रीत्ये दधानं भूरिभूषणं स्वामिनारायणाय स्वाहा नानाविधैः पुष्पहारैश्चन्दनेनार्चितं निजैः लम्बद्भिः शेखरैरम्यं मन्दस्मितमनोहरं स्वामिनारायणाय स्वाहा तारामण्डलमध्यस्थं पूर्णचन्द्रमिवोदितं भक्तमण्डलमाद्यस्थं सर्वलोकनमस्कृतं स्वामिनारायणाय स्वाहा हृदयान्निहरन्तं च निजानां करचेष्टया करुणामृतया दृष्ट्या वीक्षमाणं च चिन्तये स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्री सत्संगी जीवनाकृतये श्री हरिकृष्ण परमात्मने नमो ध्यायामि स्वामिनारायणाय स्वाहा आवाहनं स्वामिनारायणाय स्वाहा कलिकल्मषनाशाय प्रादुर्भूतं कृपाभरात् सत्संगी जीवनाकारं हरिम् आवाहयाम्यहं स्वामिनारायणाय स्वाहा आसनं स्वामिनारायणाय स्वाहा हरे सिंहासनमिदं स्वर्णरत्नविनिर्मितं तव प्रीतिकरं दत्तं गृहाण कृपया प्रभो स्वामिनारायणाय स्वाहा पाद्यं स्वामिनारायणाय स्वाहा अनन्यभावाश्रयिणां संसारार्णवतारक
पाद्यं गृहाण देवेश श्रीहरे कृपया मयि स्वामिनारायणाय स्वाहा अर्घ्यं स्वामिनारायणाय स्वाहा नानावतारचरितैः साधु सङ्कष्टनाशन श्रीहरे त्वं गृहाणार्घ्यं गन्धादिष्टाङ्गसंयुतं स्वामिनारायणाय स्वाहा आचमनीयं स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रीदुर्गपूर्जनानन्द नृपासुरमदापः स्वभक्तकुमुन्देन्दो त्वं गृहाणाचमनीयकं स्वामिनारायणाय स्वाहा स्नानं स्वामिनारायणाय स्वाहा अच्छोदोन्मत्तगङ्गावार्जलक्रीडारते हरे तत्पानीयप्रशंसाकृत् स्नानीयं प्रतिगृह्यतां स्वामिनारायणाय स्वाहा वस्त्रं स्वामिनारायणाय स्वाहा पीताम्बरमिदं कृष्ण नवीनं स्वर्णवर्णकं तवेव परिधानार्हं गृह्यतां धर्मनन्दन स्वामिनारायणाय स्वाहा यज्ञोपवीतं स्वामिनारायणाय स्वाहा सावित्रीग्रन्थिसंयुक्तं स्वर्णतन्तुविनिर्मितं गृह्यतां देवदेवेश ब्रह्मसूत्रमिदं शुभं स्वामिनारायणाय स्वाहा आभूषणानि स्वामिनारायणाय स्वाहा आभूषणानि दिव्यानि कुण्डलादीनि सत्पते गृहाण कृपया कृष्ण दत्तानि मानि भक्तितः स्वामिनारायणाय स्वाहा चन्दनं स्वामिनारायणाय स्वाहा घनसाररसोपेतं कुङ्कुमेन सुशोभितं गृहाण चन्दनं दिव्यं भक्तिधर्मात्मज प्रभो स्वामिनारायणाय स्वाहा पुष्पाणि स्वामिनारायणाय स्वाहा नानासुगन्धिपुष्पाणां हारपीडो तथैव च तुलसीवनमालां च श्रीकृष्ण स्वीकुरु प्रभो स्वामिनारायणाय स्वाहा सुगन्धतैलं स्वामिनारायणाय स्वाहा सुगन्धिद्रव्यवासाढ्यं विष्णुतैलं मनोहरं वाञ्छितं सर्वलोकानां भगवन् प्रतिगृह्यतां स्वामिनारायणाय स्वाहा धूपः स्वामिनारायणाय स्वाहा बालक्रीडा विनोदेन कालिदत्तासुरान्तकृत द्रष्टया कृत्या गणद्राव धूपः स्वीक्रियतां त्वया स्वामिनारायणाय स्वाहा दीपः स्वामिनारायणाय स्वाहा स्वयं प्रकाशमानेश नैकभास्करभास्वर गृहाण कृपया दीपम् अन्धकारनिवारकं स्वामिनारायणाय स्वाहा नैवेद्यं स्वामिनारायणाय स्वाहा नानापक्वान्न नैवेद्यं रसैः षड्भिर्मनोहरं विश्वम्भरगृहाणेदं प्रीत्यामे वरदो भव स्वामिनारायणाय स्वाहा मध्ये पानीयं स्वामिनारायणाय स्वाहा पवित्रं निर्मलं तोयम् उषिरेलादिवासितं जीवनं सर्वजीवानां पानार्थं गृह्यतां हरे स्वामिनारायणाय स्वाहा पुनराचमनीयं स्वामिनारायणाय स्वाहा निर्मलं गाङ्गमूदकं सुपवित्रं सुवासितं पुनराचमनीयं च गृह्यतां भक्तिनन्दन स्वामिनारायणाय स्वाहा ताम्बूलं स्वामिनारायणाय स्वाहा ताम्बूलं भोगसंयुक्तं लवङ्गेलाविमिश्रितं जातिफलादिसंयुक्तं श्रीकृष्ण प्रतिगृह्यतां स्वामिनारायणाय स्वाहा फलं स्वामिनारायणाय स्वाहा दिव्यं फलानां सर्वेषां सर्वदेवप्रियङ्करं नालिकेरीफलमिदं गृह्यतां धर्मधूर्धर स्वामिनारायणाय स्वाहा दक्षिणा स्वामिनारायणाय स्वाहा यथाशक्ति मया दत्तः स्वर्णरूप्यादिमुद्रिकाः वृत्तालयपुरावास दक्षिणा गृह्यतां त्वया स्वामिनारायणाय स्वाहा नीराजनं स्वामिनारायणाय स्वाहा नीराजयामि देवेश नमस्ते ज्योतिषां पते आरार्त्रिकं मया दत्तं गृहाण मुनिवल्लभ स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रदक्षिणा स्वामिनारायणाय स्वाहा नमस्ते देवदेवेश वराभयकर प्रभो त्वत्प्रदीक्षणया कृष्ण सर्वदेव प्रदीक्षणा स्वामिनारायणाय स्वाहा नमस्कार स्वामिनारायणाय स्वाहा उद्धारणाय सर्वेषां प्रादुर्भूतं धरातले सत्संगी जीवनाकारं त्वां हरिं प्रणमाम्यहं स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रार्थना स्वामिनारायणाय स्वाहा निजकर्मविपाकेन भवाब्दौ पतितोऽस्म्यहं तं मामुद्धर देवेश कृपया करुणानिधे स्वामिनारायणाय स्वाहा सत्संगी जीवनाख्यस्त्वं प्रत्यक्षः पुरुषोत्तमः
मयि त्वत्शरणायाते कृपां कुरु जगत्पते स्वामिनारायणाय स्वाहा सम्पूज्य श्रीहरिं त्वित्थं सत्सङ्गी जीवनात्मकं वक्तारं पूजयेत् भक्त्या गन्धपुष्पसर्गादिभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा नवीनवस्त्राभरणैर्दत्त्वा सम्पूज्य दक्षिणां ततः पूर्वोक्तमन्त्रेण नत्वा तं प्रार्थयेत् पुमान् स्वामिनारायणाय स्वाहा सुव्रताकार बोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय स्वामिनारायणाय स्वाहा सम्प्रार्थ्य तद्वाचकमित्थमन्यान् श्रोतॄंश्च विप्रांश्च यथार्हमर्चेत् श्रोता स्वकीयैर्नियमैरुपेतः शृणोतु भूपालकशास्त्रमेतत् स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीमत्सत्सङ्गीजीवनमाहात्म्ये शतानन्द हेमन्तसिंह संवादे तत्श्रवणविशेषविद्युक्तौ तत्पूजाविधिनिरूपणनाम तृतीयोऽध्यायः स्वामिनारायणाय स्वाहा अथ सत्संगी जीवन महात्म्ये चतुर्थोऽध्यायः शतानन्दमुनिरुवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रोत्राथ पूजितो वक्ता कुर्यान् मङ्गलमादितः मुदा वदेत् सदानन्दे इत्यादिश्लोकत्रयं नृप स्वामिनारायणाय स्वाहा स्वामिनारायणो नीलकण्ठो नारायणो हरिः हरिकृष्णश्च सहजानन्दः कृष्णोऽस्तु मे हृदि स्वामिनारायणाय स्वाहा ततो वैराग्यवेगेति श्लोकद्वयमुदीरयेत् स वक्ता पुस्तकं नत्वा ततः पद्येत्विमि पठेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रूयतां देवदेवेश स्वामिनारायण प्रभो त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभाः कथाः स्वामिनारायणाय स्वाहा नत्वा श्रीसहजानन्दस्वामिनं भक्तिधर्मजं तद्वाणीं च शतानन्दं ततो जयमुदीरयेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा इति पद्ये पठित्वैव वाचयेत् स कथां बुधः साधून् विप्रन् विलोक्यैव कुर्यादर्थं न योषितः स्वामिनारायणाय स्वाहा समाप्तिर्यस्य यस्यान्ते नाध्यायस्याथ सम्मतः न तत्र तत्र वीरमेद् अध्यायास्तान् वदाम्यहं स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्र प्रकरणे त्वाद्ये द्वितीयः प्रथमस्तथा तृतीयोऽष्टादशः षष्ठो निषिद्धा विरता विमे स्वामिनारायणाय स्वाहा एकत्रिंशस्त्रयस्त्रिंशः पञ्चत्रिंशत्तमस्तथा अष्टत्रिंशो मताश्चेते निषिद्धा विरता विह स्वामिनारायणाय स्वाहा एकोनचत्वारिंशश्च चत्वारिंशत्तमस्तथा द्विचत्वारिंश इत्येते निषिद्धा विरतौ मताः स्वामिनारायणाय स्वाहा अध्यायः सप्तपञ्चाशस्त्रीपञ्चाशत्तमस्तथा अध्यायो विरतावेतो द्वावप्यत्र निषेधितो स्वामिनारायणाय स्वाहा द्वितीये च प्रकरणे प्रथमो नवमस्तथा षष्ठो निषेधिताश्चैते विरतौ सम्मता नृप स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशस्तथा अध्यायः षोडशश्च त्रयोदशः त्रयोविंशश्चतुर्विंशो न मता विरता विमे स्वामिनारायणाय स्वाहा अष्टत्रिंशत्तमः पञ्चचत्वारिंशतमस्तथा त्रिंशत्तमस्तथा अध्यायो निषिद्धा विरता विमे स्वामिनारायणाय स्वाहा तृतीये च प्रकरणे नवमो दशमस्तथा वीरतो षोडशः सप्तदशश्चेतेन सम्मतः स्वामिनारायणाय स्वाहा एकोनविंशतितमस्त्रयोविंशो न सम्मतः एकत्रिंशत्तमोऽध्यायो द्वात्रिंशो विरता विमे स्वामिनारायणाय स्वाहा चत्वारिंशस्त्रयस्त्रिंशो द्विचत्वारिंश ईरितः त्रिचत्वारिंश इत्येते निषिद्धा विरता विह स्वामिनारायणाय स्वाहा षट्चत्वारिंशकः सप्तचत्वारिंशत्तमस्तथा द्विपञ्चाशत्तमश्चैते विरतौ न हि सम्मताः स्वामिनारायणाय स्वाहा अध्यायश्चाष्टपञ्चाशो द्विषष्टितम ईरितः त्रिषष्टितम इत्येते निषिद्धा विरतौ नृप स्वामिनारायणाय स्वाहा आद्यः प्रकरणे तूर्ये पञ्चमो नवमोऽष्टमः द्वाविंशो दशमो विंशो निषिद्धा विरता विमे स्वामिनारायणाय स्वाहा चतुस्त्रिंशत्तमस्त्रिंशः षट्त्रिंशो विरता विमे
त्रिचत्वारिंशकश्चैकचत्वारिंशो न सम्मतः स्वामिनारायणाय स्वाहा षट्चत्वारिंशक चतुश्चत्वारिंशत्तमौ तथा चतुः पञ्चाश इत्येते निषिद्धा विरतौ मताः स्वामिनारायणाय स्वाहा षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः सप्तपञ्चाश इत्यमि अध्यायश्चाष्टपञ्चाशो वीरतो न हि सम्मतः स्वामिनारायणाय स्वाहा एकोनषष्टितमको द्विषष्टितम इत्यमि षष्टितमश्च विरतावध्यायः प्रतिषेधिताः स्वामिनारायणाय स्वाहा चतुष्षष्टितमश्चाथ त्रिषष्टितमको नृप निषिद्धो वीरतावेताव अध्यायो सम्मताविह स्वामिनारायणाय स्वाहा पञ्चषष्टितमोऽध्यायो विरताविह भूपते षट्षष्टितम इत्येतो प्रतिषिद्धो मतावुभौ स्वामिनारायणाय स्वाहा अष्टषष्टितमोऽध्यायो नृपते वीरताविह अध्यायः सप्ततितम इत्युभौ सन्निषेधितौ स्वामिनारायणाय स्वाहा द्वितीयः पञ्चमेऽध्यायः षष्ठः प्रकरणे तथा तृतीयः सप्तमश्चैते विरतौ प्रतिषेधिताः स्वामिनारायणाय स्वाहा त्रयोदश तथा विंशो वीरतो चैकविंशकः प्रतिषिद्धस्तथा त्रिंशो द्वात्रिंशम् उदिता इमे स्वामिनारायणाय स्वाहा अष्टत्रिंशस्तथा अध्यायः पञ्चत्रिंशत्तमो मताः निषिद्धा विरतावेव द्विचत्वारिंश इत्यमि स्वामिनारायणाय स्वाहा त्रिचत्वारिंश एकोनषष्टितम उदीरितः निषिद्धा सप्तपञ्चाशो वीरता वित्यमिन्द्रुप स्वामिनारायणाय स्वाहा षष्टितमस्तथा अध्यायश्चतुःषष्टितमो मताः षट्षष्टितम इत्येते विरतौ प्रतिषेधिताः स्वामिनारायणाय स्वाहा एषामन्तेन वीरतिः कार्ये तद्वाचकैः क्वचित् नित्येकाध्यायपाठानाम् अप्येष विधिरिष्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा मुहूर्तं घटिकां वापि कथान्ते नाम कीर्तनं कुर्यात् प्रतिदिनं विष्णोरुत्तरेदासनात् ततः स्वामिनारायणाय स्वाहा पुनर्नत्वा स गुरुवादिन् गच्छेद् विद्वान् निजं गृहं कथा समाप्तिपर्यन्तं नित्यमेवं समाचरेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा कथारम्भदिनाद्यावत् समाप्त्यन्यस्य नाहरेत् अन्नं प्रतिगृहं वापि पापभीरुः स पण्डितः स्वामिनारायणाय स्वाहा न दद्युः स्वस्य पर्याप्तं श्रोतारः प्रत्यहं यदि अन्नं तदा त्वन्यदत्तं गृहिण्यान्नात्र पातकं स्वामिनारायणाय स्वाहा सप्ताहे वा नवाहे वा पक्षपारायणे तथा पारायणे च मासर्त्वोस्तस्येष विधिरीरितः स्वामिनारायणाय स्वाहा वातुलं नैव भुञ्जीत न कुर्याच्चाति भोजनं न रोगकृच्च शाकादि तैलं कटु च वर्जयेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा ब्रह्मचर्यमहिंसां च सत्यास्तेय च पालयेत् कथा विघ्नकरं यत्तत् कर्म कुर्यान्न कर्हिचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा पूर्वोक्तलक्षणैर्युक्तः श्रोता पुस्तकवाचको पूर्वोक्तेन विधानेन सम्पूज्य शृणुयात् कथां स्वामिनारायणाय स्वाहा अनुष्णीषो प्रौढपादो न गच्छन्श्च सलान्तरं पूगाद्यनश्नश्च शुचिर्वाग्यतः शृणुयात् कथां स्वामिनारायणाय स्वाहा वीरासनेनोपविशेन्न च पश्येदितस्ततः वार्तां कुर्यात् च नान्योन्यं तदेकाग्रमना भवेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा संशये सति वक्तारं पृच्छेत् च शनकैर्नमन् करपादादिचापल्यं श्रोता कुर्यान्न संसदि स्वामिनारायणाय स्वाहा पालयेद् ब्रह्मचर्यादीन् नियमानुत्सवाहिके तथा प्रकरणस्यान्ते शक्त्या दद्यात् च दक्षिणां स्वामिनारायणाय स्वाहा एकैकस्मिन् प्रकरणे समाप्ते भोजयेद्विजान् शक्तः श्रोता तु 50 अवरान् श्रद्धया नृप स्वामिनारायणाय स्वाहा अशक्तोऽस्य समाप्तो तु भोजयेत् शतावरान् तदिष्टभोजनेर्विप्रान् दक्षिणाभिश्च तोषयेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा कथा प्रारंभ दिवसे सम्पूज्यादौ गणाधिपं ब्राह्मणान् वरयेन्मुख्यः श्रोता त्रीन् जपहेतवे स्वामिनारायणाय स्वाहा सहस्रपञ्चकं नित्यं समाप्य वदिते नृप अष्टाक्षरो मनुर्जप्यो हरिप्रीत्ये दृढव्रतैः स्वामिनारायणाय स्वाहा अन्नवस्त्राणि तेभ्योऽपि दद्याद् अन्ते च दक्षिणां
श्रोतृभ्यश्चापि विप्रेभ्यः शक्त्या दद्याच्च दक्षिणां स्वामिनारायणाय स्वाहा मलमूत्रजयार्थं च स्वल्पहारः सुखावः हविष्यान्नेकभक्तं श्रोता कुर्यात् ततो नृप स्वामिनारायणाय स्वाहा उपवासः प्रकर्तव्यः सप्ताहे सप्तवासरान् फलाहारमशक्तस्तु कुर्याद्वापि पयः पिबेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा अद्यान्निर्लवणं चान्नम् एकभक्तं च वाचरेत् सुखसाध्यं भवेत् तद्य तत्कर्तव्यं श्रवणार्थिना स्वामिनारायणाय स्वाहा भोजनं तु वरं मन्ये कथा श्रवणकारकं नोपवासो मतः श्रेष्ठः कथा विघ्नकरो यदि स्वामिनारायणाय स्वाहा समाप्ति दिवसे कार्या महापूजा यथाधनं सर्वेऽपि श्रावकाः कुर्युर्वक्तुः पूजां यथोचितं स्वामिनारायणाय स्वाहा नूत्नकौशेयवस्त्राणि कुण्डले कटकादि च दद्यात् श्रोताग्रिमो वक्त्रे स्वर्णमुद्रः स्वशक्तितः स्वामिनारायणाय स्वाहा सत्यं तु धनसम्पत्तो वीतशाठ्यं न कर्हिचित् स कुर्वीत यथा प्रोक्त फलावाप्तिच्छुरस्य हि स्वामिनारायणाय स्वाहा अन्येऽपि शक्तितो दद्युर्वस्त्रालङ्कारदक्षिणाः गृहस्थधर्मोपैकं देयं यत्किञ्चिदेव वा स्वामिनारायणाय स्वाहा स्वर्णमाशो रोप्यको वा दक्षिणोक्ता स्वशक्तितः श्रोतॄणाल्पवित्तानां वक्त्रे देया पृथक् पृथक् स्वामिनारायणाय स्वाहा धेनुं प्रयत्नतो दद्यात् ततो वक्त्रे पयस्विनीं दशांशेनोक्तमन्त्रस्य होमं कुर्यात् ततः परं स्वामिनारायणाय स्वाहा द्रव्येण पायसाज्येन ततो व्यहरितिभिर्नरः तिलव्रीहिद्रव्यहोमं कुर्वीत च यथाविधि स्वामिनारायणाय स्वाहा होमानुकूल्यं न स्याच्चेत् तन्निष्क्रयधनं पुमान् दद्यात् तेनापि सम्पूर्णं फलं स्यान्यत्र संशयः स्वामिनारायणाय स्वाहा विशेष इति ते प्रोक्तः सत्सङ्गी जीवनश्रुतो प्रागुक्तोऽपि च विधिर्ज्ञातव्योऽत्र त्वया नृप स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्थं विधानेन च शास्त्रमेतत् शृण्वन्ति ये भूमिपते नरास्ते फलं पुरोक्तं सकलं लभन्ते स्वाभीष्टमत्रापि परत्र नूनं स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीमत्सत्सङ्गीजीवनमाहात्म्ये शतानन्दहेमन्तसिंहसंवादे तत्श्रवणविशेषविद्युक्तो विरतिनिषेधाध्यायसङ्ख्यानिरूपणनाम चतुर्थोऽध्यायः स्वामिनारायणाय स्वाहा अथ सत्संगी जीवन महात्म्ये पंचमोऽध्यायः राजोवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा सप्ताहे च नवाहे च पक्षपारायणे तथा मासपारायणे चापि ऋतुपारायणे मुने स्वामिनारायणाय स्वाहा ये त्वया विहितः पूर्वम् अध्याया विरतौ मुने निषेधस्य विहायैतान् कार्यं पारायणं कथं स्वामिनारायणाय स्वाहा वाच्यः कियन्तः सप्ताहे त्वध्यायः प्रत्यहं मुने पारायणे नवाहे च पक्षपारायणे तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा मासपारायणे चापि ऋतुपारायणे तथा वाचनीयाः कियन्तश्च महामुने स्वामिनारायणाय स्वाहा एतद्वेदितुमिच्छामि त्वतः सर्वं यथार्थतः यतस्त्वदन्यो नो वेति ततस्त्वं ब्रूहि मे मुने स्वामिनारायणाय स्वाहा शतानन्दमुनिरुवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा सप्ताहेन यदा कुर्याद् एतत् पारायणं तदा नरेन्द्र तुभ्यम् अध्याय नियमं कथयाम्यहं स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रथमे दिवसेऽध्यायः षट्चत्वारिंशदीरिताः वाचनीया दिने पञ्चचत्वारिंशद्द्वितीयके स्वामिनारायणाय स्वाहा तृतीये निचते वाच्यः षट्चत्वारिंशदीरिताः अध्यायाश्च दिने पञ्चचत्वारिंशत्तुरीयके स्वामिनारायणाय स्वाहा पंचमे च दिने पञ्चचत्वारिंशदुदीरिताः वाच्या षष्ठे तावन्तः पारायणविधायिभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा सप्तचत्वारिंशदुक्ता दिने वाच्याश्च सप्तमे
प्रोक्तो मयेति सप्ताहे ध्यायानां वाचनक्रमः स्वामिनारायणाय स्वाहा कूर्वितास्य नवाहेन यदा पारायणं तदा अध्याय नियमं राजन्स्तुभ्यं शुश्रूषवे ब्रुवे स्वामिनारायणाय स्वाहा 36 प्रथमेऽध्याया दिने वाच्यः समीरिताः द्वितीये च तावन्तः 35 तृतीयके स्वामिनारायणाय स्वाहा 35 दिने तूर्ये 34 च पञ्चमे 35 च 36 वाच्याः षष्ठे च सप्तमे स्वामिनारायणाय स्वाहा वाचनीयतया अध्यायः 35 दिनेष्टमे नवमे दिवसे 37 समीरिताः स्वामिनारायणाय स्वाहा पक्षेण विदधितास्य यदा पारायणं तदा नियमं वाचनीयानाम् अध्यायानामहं ब्रुवे स्वामिनारायणाय स्वाहा 21 वाच्यः प्रथमवासरे 22 तृतीये चैकविंशतिः स्वामिनारायणाय स्वाहा तूर्ये 22 प्रोक्तः पञ्चमे चैकविंशतिः षष्ठे विंशतिर्वाच्यः सप्तमे 22 स्वामिनारायणाय स्वाहा अष्टमे दिवसेऽध्याया 22 नवमे वासरेऽध्याय वाचनीयाश्च 20 स्वामिनारायणाय स्वाहा दशमे 20 प्रोक्ता वाच्यास्त्वेकादशे दिने अध्याया 20 पारायण विधानके स्वामिनारायणाय स्वाहा 22 सम्प्रोक्ताश्च त्रयोदशे 21 वाचनीयास्तु वासरे स्वामिनारायणाय स्वाहा चतुर्दशे दिने ध्याया 22 त्रयोविंशतिरेवोक्ता वाच्यः 15 दिने स्वामिनारायणाय स्वाहा विदधितास्य मासेन पारायणम् अनुत्तमं यदा तदा ब्रुवेध्याय नियमं च यथाक्रमं स्वामिनारायणाय स्वाहा आद्यह्नेकादश प्रोक्तास्तावन्तश्च द्वितीयके तृतीये च दिनेऽध्याया वाचनीयास्तथा दश स्वामिनारायणाय स्वाहा तूर्येऽह्नेकादश प्रोक्ता वाचनीयाश्च पञ्चमे तावन्तश्च यतथा षष्ठे वाच्यास्तावन्त एव हि स्वामिनारायणाय स्वाहा सप्तमे 12 प्रोक्ता 10 चाष्टमवासरे 12 दिने वाच्या नवमे दशमे 10 स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशे दिनेऽध्याया वाच्याश्चैकादश स्मृताः 12 प्रोक्ता 10 चाह्नि त्रयोदशे स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादश दिनेऽध्याया वाचनीयाश्चतुर्दशे 10 पञ्चदशे वाच्यास्तावन्तः षोडशे दिने स्वामिनारायणाय स्वाहा 17 प्रोक्ता वाच्याष्टादशे दिने एकादशैव तावन्तो दिने चैकोनविंशके स्वामिनारायणाय स्वाहा 10 दिने चैकविंशके 10 कीर्तितः 22 च त्रयोविंशे 12 स्मृतः स्वामिनारायणाय स्वाहा 24 प्रोक्तः 25 दिने 9 अध्याया वाचनीयास्तु पारायण विधायिभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा 26 10 प्रोक्तः 27 च वासरे 11 ततो वाच्या 18 दिने स्वामिनारायणाय स्वाहा 29 वाच्यास्त्वेकादशोदिताः नवैव दिवसे 30 पारायणपरायणैः स्वामिनारायणाय स्वाहा ऋतूना विदधितास्य यदा पारायणं तदा नियमं वाचनीयानाम् अध्यायानामहं ब्रुवे स्वामिनारायणाय स्वाहा आद्य द्वितीययोः 5 तृतीये पञ्चतुर्यके पञ्चमे च षडध्याया वाच्यः षष्ठे च षड्दिने स्वामिनारायणाय स्वाहा सप्तमे दिवसे 5 षडे वोक्ता दिनेष्टमे दिवसे नवमेऽध्यायः पञ्चेव दशमे च षट् स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशे पञ्चोक्ता वाच्याश्च 12 तथा त्रयोदशे षडध्याया दिने 5 चतुर्दशे स्वामिनारायणाय स्वाहा पञ्चदशेऽध्याया वाच्याः षट् चाह्नि षोडशे 5 सप्तदशे प्रोक्तास्तावन्तोऽष्टादशे दिने स्वामिनारायणाय स्वाहा 19 दिवसे च षडीरिताः 21 दिने 5 प्रोक्ता 22 च षट् स्वामिनारायणाय स्वाहा 23 षडे वोक्ताश्चतुर्विंशे च वासरे
पंचवाच्यात्तयाध्याय अहनि षट् पंचविंशके स्वामिनारायणाय स्वाहा पञ्चषड्विंशके प्रोक्तास्तावन्तः सप्तविंशके अष्टाविंशे दिनेऽध्याय वाच्यास्तावन्त ईरिताः स्वामिनारायणाय स्वाहा एकोनत्रिंशकेऽध्याय वाचनीयः षडीरितः त्रिंशे च दिवसे पंच प्रोक्तः पारायणे नृप स्वामिनारायणाय स्वाहा एकत्रिंशे पञ्चोक्ताः पञ्चद्वात्रिंशके तथा त्रयस्त्रिंशे षडध्यायाश्चतुस्त्रिंशे च पंच वै स्वामिनारायणाय स्वाहा पंचत्रिंशके च पंचोक्तः पंचषट्त्रिंशके तथा सप्तत्रिंशे षड्वाच्याः पंचाष्टत्रिंशके दिने स्वामिनारायणाय स्वाहा अध्यायः पञ्चचैकोनचत्वारिंशत्तमे दिने चत्वारिंशत्तमे वाच्यास्तथा पञ्चप्रकीर्तिताः स्वामिनारायणाय स्वाहा चत्वारो दिवसे चेकचत्वारिंशत्तमे मतः द्विचत्वारिंशके वाच्यः षडध्यायः समीरितः स्वामिनारायणाय स्वाहा त्रिचत्वारिंशकेऽध्याय पञ्च एव हि वासरे चतुश्चत्वारिंशकेष्टौ वाचनीयः प्रकीर्तिताः स्वामिनारायणाय स्वाहा षडेव दिवसे पञ्चचत्वारिंशत्तमे मतः षट्चत्वारिंशकेऽध्याय वाच्यः पञ्च समीरितः स्वामिनारायणाय स्वाहा पञ्चाध्यायादिने सप्तचत्वारिंशत्तमे मताः वाच्यः पञ्च तथा चाष्टचत्वारिंशत्तमे दिने स्वामिनारायणाय स्वाहा वाच्यास्त्वेकोनपञ्चाशे पञ्चाध्याया दिने तथा पञ्चाशे च तथा चेक पञ्चाशे पञ्च पञ्च च स्वामिनारायणाय स्वाहा वाचनीयादिपञ्चाशे त्रिपञ्चाशत्तमे तथा चतुः पञ्चाशकेऽध्यायः पञ्च पञ्च च पञ्च च स्वामिनारायणाय स्वाहा पञ्चपञ्चाशकेऽध्याय वाच्यः पञ्च समीरितः षट्पञ्चाशत्तमे पञ्च सप्तपञ्चाशके च षट् स्वामिनारायणाय स्वाहा वाचनीयादिने चाष्टपञ्चाशत्तम ईरिताः षडध्याय महीपाल पारायण परेर्द्विजैः स्वामिनारायणाय स्वाहा दिने चत्वार एकोनषष्टितम उदीरितः वाचनीयः किलाध्यायः पञ्चषष्टितमे दिने स्वामिनारायणाय स्वाहा पारायणेषु सप्ताह प्रमुखेष्वित्थमादितः वाचनीयाध्याय संख्या कथिता ते नृपोत्तम स्वामिनारायणाय स्वाहा अध्याया विरतो ये तु निषिद्ध्या अवसानकं तेषां विहाय शङ्खेशा ज्ञेया राजन्स्त्वया स्फुटं स्वामिनारायणाय स्वाहा पक्षपारायणे पक्षो ज्ञेयः पञ्चदशाहिकः मासपारायणे मासस्त्रिंशत्ता दिवसैस्तथा स्वामिनारायणाय स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीमत्सत्सङ्गीजीवनमाहात्म्ये शतानन्द हेमंत सिंह संवादे पारायण विधि निरूपणे पंचमोऽध्यायः स्वामिनारायणाय स्वाहा बोलो स्वामिनारायण भगवाननी जय श्री हरि कृष्ण महाराजनी जय श्री राधारमण देवनी जय श्री लक्ष्मी नारायण देवनी जय श्री नर नारायण देवनी जय श्री गोपीनाथ जी महाराजनी जय श्री मदन मोहन जी महाराजनी जय श्री कष्टभंजन देवनी जय वर्णिवेशरमणीय दर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री नरनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री प्रभवे नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री भक्ति धर्मात्मजाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री अजन्मने नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री हरये नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री हरि कृष्णाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री घनश्यामाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री धार्मिकाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री भक्तिनंदनाय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ओम श्री बृहत्वतधराय नमः। ओम श्री स्वामिनारायणाय
स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री शुद्धाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री राधा कृष्ण इष्ट देवताय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री मरुत्सत प्रियाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा काल भैरवाद्याति भीषणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री जितेन्द्रियाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री जिताहाराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री तीव्र वैराग्याय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा आस्तिकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री योगेश्वराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री योग कला प्रवृत्ते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री अतिधैर्यवते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री ज्ञानिने नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री परमंसाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री तीर्थकृते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा तीर्थकार्चिताय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा क्षमानिधे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा सुनिद्राय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा ध्याननिष्ठाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा तपःप्रियाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा सिद्धेश्वराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा स्वतंत्राय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा ब्रह्म विद्या प्रवर्तकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा भाषण्डोच्छेदन पटवे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा स्वस्वरूपाचलस्थितये नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा प्रशांत मूर्ते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री निर्दोषाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा असुर गुरुवादि मोहनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री अतिकारुण्य नयनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री ऊर्ध्वार्ध प्रवर्तकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री महाव्रताय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री साधुशीलाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री साधु विप्र प्रपूजकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री अहिंसा यज्ञ प्रस्तोत्रे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री साकार ब्रह्म वर्णनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री स्वामिने नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री कालदोष निवारकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा सत्शास्त्र व्यसनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा सद्य समाधि सिद्धिकारकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री कृष्णार्चा स्थापन कराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री कौलद्विषे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा कलितारकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री प्रकाश रूपाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री निर्दम्भाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री सर्वजीव हितावहाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री भक्ति संपोषकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री वाग्मिने नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा चतुर्भगफलप्रदाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री निर्मत्सराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा भक्तवर्मणे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री बुद्धिदात्रे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री अतिपावनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा बुद्धरते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा ब्रह्मधाम दर्शकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री पराजिताय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा आसमुद्रांत सत्कीर्तये नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री संस्कृति मोचनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री उदाराय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री सहजानंदाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा सात्विक धर्म प्रवर्तकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री कंदर्प दर्प दलनाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा वैष्णवक्रतुकारकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री पंचायतन सन्मानाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री नैष्ठिक व्रत पोषकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा प्रगल्भाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा निस्पृहाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा सत्यप्रतिज्ञाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री अरोषणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री दीर्घदर्शिने नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री षडूर्मि विजय क्षमाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री निरहंकृते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री अद्रोहाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री ऋजुवे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री सर्वोपकारकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री नियामकाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री स्वाहा उपशंसितये नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री विनयवते नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री गुरुवे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री जातवेरिणे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री निर्लोभाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री महापुरुषाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम स्वाहा श्री आत्मदाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय ओम श्री
स्वाहा श्री अखंडितार्ष मर्यादाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री व्यास सिद्धांत बोधकाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री मनो निग्रह युक्तिज्ञाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम श्री स्वाहा यमदूत विमोचकाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा श्री पूर्णकामाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा श्री सत्यवादिने नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री गुणग्राहिणे नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा श्री गतस्मयाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम सदाचार प्रियतराय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री पुण्य श्रवण कीर्तनाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री सर्वमंगल सद्रूप नाना गुण विचिताय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा श्री स्वामी नारायणाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय इति स्वाहा श्री जन मंगल नामावली समाप्ता बोलो स्वामी नारायण भगवान नी जय श्री हरि कृष्ण महाराज नी जय श्री राधा रमण देव नी जय श्री लक्ष्मी नारायण देव नी जय श्री नर नारायण देव नी जय श्री गोपीनाथ जी महाराज नी जय श्री मदन मोहन जी महाराज नी जय श्री कष्टभंजन देव नी जय।